everyone. Are you confused between accounting standard, Indian accounting standard, international accounting standard, international financial reporting standard, US GAAP and ASC? There are so many accounting standards going on in the world at the moment. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सभी को पता है इंडियन पर्सपेक्टिव में यूज़ होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे सब लोगों ने. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट. दीज बोथ आर out of Indian perspective. Then we have IAS, which is International Accounting Standards. Then we have IFRS, which is International Financial Reporting Standards. These are related to global perspective. Then we have US GAAP, United States Generally Accepted Accounting Principles. And then ASC. आप में से शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा ASC, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन. ये दोनों यूएस अमेरिका के पर्सपेक्टिव से हैं. नाउ सबको एक एक करके समझते हैं व्हाट आर दीज. ओके, सो करेंटली वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ग्लोबली. ओके, सो व्हाट हैपेंड, लेट्स अंडरस्टैंड द ग्लोबल पोजीशन फर्स्ट. Okay, so globally we used to have international accounting standards issued by International Accounting Standard Board, IASB. Okay, now international accounting standards were issued a long time ago. So as you all know, situations are changing, business, the way of business is doing is also changing day by day. Environment is also changing, business environment, strategic environment is also changing. So there was a need to update these international accounting standards. Okay, so whenever there was a upgradation in international accounting standards, so that upgraded accounting standard were called IFRS. Okay, it was called International Financial Reporting Standards. For example, IAS 17 was on lease. Okay, so this was recently updated 2 to 3 years ago. The new standard was issued against it, that was IFRS 16. Okay, International Financial Reporting Standard 16. This stands deleted. Okay, so when there was a upgradation in international accounting standards, IFRS, corresponding IFRS were issued. So globally, what is the position at the moment? IAS plus updated IAS, which are called IFRS. So globally the position is there are certain IAS and there are certain IFRS also. Okay, so IAS and IFRS are not different, they are both issued by International Accounting Standard Board, but the only difference is IFRS are the upgraded version of certain IAS. Okay, another example is IAS 18 on revenue. Okay, that was also recently deleted and new IFRS 15 were issued. 15 were issued. Okay, now I hope the difference between IAS and IFRS is clear to you. Now when again comes to the Indian perspective, when IFRS were issued globally, so countries have to take these IFRS into consideration because every country wants to follow the global standards. So there was two options available to every country. One was the adoption option and the second was the convergence option. Okay, adoption option was taking the respective IFRS as it is. As it is, I mean just copy and paste it. Okay, so for example, Pakistan. So Pakistan, when IFRS were issued, Pakistan did not issue their own standards. Okay, it as it is adopted those IFRS. So that is called adoption route. Another one was called convergence route. This was actually adopting IFRS with certain modifications.
What kind of modification? Any kind of modification which any country deem fit in their respective political and business environment. For example, India did not adopt IFRS as it is. India choose to adopt second route, which was convergence route. What India did, India made certain modification in the IFRS according to Indian perspective. सर इन मॉडिफिकेशन को क्या नाम दें? ओके, दीज मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड कार्व आउट्स. ओके, जब आप CA फाइनल FR की तैयारी करेंगे और इलेक्टिव में जो भी लोग ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का एग्ज़ाम अगर चूज़ करते हैं तो दे विल स्टडी दीज कार्व आउट्स. ओके, so these modifications were called carve outs. So what India did IFRS plus carve outs. These IFRS plus carve outs were called Ind AS along with IAS. Okay, so India converged IAS plus IFRS and these were called Ind AS. Now what is the difference? एक्चुअली हुआ क्या, देयर आर सर्टेन IAS एंड देयर आर सर्टेन IFRS ग्लोबली. ना इंडिया को या तो दो नाम अलग से रखने पड़ते, इंडिया ने नाम एक ही रखा, इंड AS. दोनों को इंड AS ही बुलाया, IAS को भी इंड AS बुलाया, IFRS को भी इंड AS बुलाया. फॉर एग्जांपल IAS 1 बन गया इंड AS 1, लेकिन IFRS 1 को इंडिया इंड AS 1 नहीं बुला सकता था बिकॉज इंड AS 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो व्हाट इंडिया डिड, इंडिया प्लेड अ नंबरिंग गेम. एक नंबरिंग गेम खेला इंडिया ने क्या किया, जो IAS थे उनका नंबर इंड AS से मिला के रखा और जो IFRS से उसमें क्या करा, इंड AS की 100+ की सीरीज़ निकाल दी. सर समझ में नहीं आया? सिंपल, IAS 1 बन गया इंड AS 1, IFRS 1 बन गया इंड AS 101. तो व्हाट इंडिया डिड IFRS का जो भी नंबर था, लेट्स से 2 + 100. सो IAS 2 became Ind AS 2, IFRS 2 became Ind AS 102. This is nothing but numbering game. IAS and IFRS are together. India converged into Ind AS, but for IFRS they issued a 100+ series. So it's just a numbering game and nothing else. Now when we comes to United States of America, इनका प्रिंसिपल सीधा था, एकला चलो रे. ओके, हमें मतलब नहीं है ग्लोबली क्या हो रहा है, हम अपना देखेंगे अपने हिसाब से. तो ऑलरेडी US गैप थे, यूनाइटेड स्टेट्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. वॉट एवर द चेंजेस वर ब्रॉट इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू IFRS और थ्रू अपडेशन, US ने कोई नया स्टैंडर्ड इशू नहीं करा, उन्होंने US गैप में ही एक्यूमुलेट करा. ओके, कोई नया स्टैंडर्ड नहीं इशू करा, उन्होंने US गैप में ही जो भी चेंजेस थे, जो चेंजेस उनको अच्छे लगे, उन्होंने US गैप में एक्यूमुलेट करे. फिर सर ASC क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन. एक्चुअली US गैप काफ़ी पुराने हैं. US गैप में एक्चुअली देयर इज़ नो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एज सच, दे इशू प्रोनाउंसमेंट. ओके, आइटमाइज्ड प्रोनाउंसमेंट कि लेट्स से देयर इज़ अ इशू ऑफ particular issue, so they issue the pronouncement related to that issue. So there were thousands of these US GAAP pronouncement, thousands, not in hundreds, thousands. Okay, thousands of pronouncement were issued till 2009. US ने क्या किया, इन प्रोनाउंसमेंट को रफली समराइज कर दिया इनटू 90 अकाउंटिंग टॉपिक्स में. ध्यान दें, 90 अकाउंटिंग टॉपिक्स में क्या करा, समराइज़ कर दिया. किसको, जो 2009 तक जितने हज़ारों प्रोनाउंसमेंट थे US गैप के, उनको 90 टॉपिक्स में समराइज़ कर दिया. दीज समराइज्ड टॉपिक्स वर कॉल्ड ASC अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन. तो सर US गैप और ASC में कोई डिफरेंस है? देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. ASC आर जस्ट दी समराइज रीऑर्गेनाइज्ड US गैप. ओके, they just made US GAAP user friendly and then they issued ASC. Okay, just summarized form of US GAAP because हज़ारों प्रोनाउंसमेंट को पढ़ना बहुत टफ हो गया था, तो they just issued roughly 90 summarized
codification which were called accounting standard codification. They did not change US GAAP. Okay, the end. I hope you like it. Thank you.